क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम बिटकॉइन की इन डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे एंड मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी आपको अपडेट चाहिए एसईसी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ चल रही है अभी मार्केट में, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपको इंस्टेंटली अपडेट चाहिए उसके लिए मेरा ट्विटर हैंडल ज़रूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे ट्विटर पे मैं आपको इंस्टेंटली अपडेट्स देते आ रहा हूँ। एंड आई गेस यू ऑल नो ऑलरेडी कि बाइनेंस के साथ क्या हो रहा है। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द मार्केट। सो एसईसी ने बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस यूएस के ऊपर एंड सीजी के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया है एंड मोस्ट प्रॉब्ली बाइनेंस यूएस इज़ अबाउट टू शट डाउन। उन्होंने काफ़ी पेयर डी लिस्ट भी कर दिया और उनके एसेट्स को भी लॉक कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देर आर टू बाइनेंस एज ऑफ there are two sorts of Binance. The one is the global Binance and the second one is the Binance in US. So that is a different one. So you guys don't need to panic about it, but still अगर आपको चाहिए कि कोई और एक्सचेंज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखें एंड दैट्स द रीज़न पूरे फंड्स बाइनेंस पर रखना एट दिस मोमेंट एट द टाइम ऑफ फंड इज़ नॉट गुड। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने फंड्स बाय बिटगेट या MEXC पे रख सकते हैं। और इफ़ यू आर होल्डिंग अ बिग अमाउंट इन दैट केस यू कैन यूज ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क और एनीथिंग लाइक दैट। Anyway, guys, coming straight to the content, I will talk about Bitcoin, just pure Bitcoin today. And हमने किस तरीके से ट्रेड लिया, किस तरीके से हमने प्रॉफिट जनरेट किया। 2 days back when everybody was bearish, we took the right opportunity and made the right choice of longing the market when everybody was shorting the market, right guys? So I will take you to the charts, but before that, if you haven't subscribed to the channel, do make sure to subscribe my channel, as well as show your love in the comment section. Are you guys making any sorts of money with my signals? आप लोग पैसे बना पा रहे हैं क्या? आप लोग मेरे एनालिसिस से कुछ आइडिया आता है आपको कि आप कुछ लर्न कर पा रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. ओके, सो first thing first, as usual, today first and the last thing is Bitcoin only. So this was the channel pattern that we've been talking about from the day ones when we have got this rejection. So इसी चैनल के बारे में मैं आपसे मल्टीपल टाइम्स बात करते आ रहा था। मार्केट जब यहाँ भी था तभी मैंने आपको इस बारे में रिगार्डिंग बताया था और मैंने बोला था कि मार्केट इस बार अगर इसके नीचे आता है, ओके, तो हमको क्रैश देखने के लिए मिलेगा एंड जो ये लोअर सपोर्ट है, जो लोकल सपोर्ट था बिटकॉइन के लिए, वो होल्ड नहीं हो पाएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंड। जैसे ही ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, सो एवरी कैंडल राइट नाउ दैट यू आर वाचिंग इज फॉर 4 hourly टाइम फ्रेम. So when we have seen some sort of consolidation below the support region, while everybody inside the market was shorting, while there was FUD about the Coinbase and the market didn't reacted much, I got it that this is the point when we need to long the market rather than shorting it. Okay, so मैं इस रीजन तक के लिए नहीं वेट किया, मैंने थोड़ा सा बड़ा रीजन बना लिया। अगर वहाँ से नीचे भी आता तो डेफिनेटली मैं और भी पोजीशन को लॉन्ग करता, बट इन just like 8 hours we have got our all like mostly targets getting hit up. Okay, तो इसके रिगार्डिंग एक रील भी मैंने पोस्ट की है, ज़रूर से देखना कि किस टाइप का प्रॉफिट मैं जनरेट किया है एंड डेफिनेटली यू गाइज ऑल्सो मेड सम दिस सॉर्ट्स ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ये सिग्नल मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर से शेयर किया था. All right guys, so this is what actually happened. We longed the market, we took the profits. Now what's next? You guys are waiting for what is next guys, right? कि अब क्या होने वाला है मार्केट के साथ. उसके बाद हमको शार्प, नॉट शार्प एक्चुअली, बट सम कंसोलिडेशन ऑफ डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है. I want to take you on one more chart why I have longed this Bitcoin and what are the probabilities of staying in an uptrend. Okay, so we will talk about the uptrend and the downtrend. What are the probabilities? So first thing, why we took this long opportunity. So the time, okay, there were 2-3 multiple reasons why I have took this long trade. So the white line that you are watching it right here is 200 EMA. You guys know that कि मैं EMA को बहुत इम्पॉर्टेंस देता हूँ एंड हाईली इम्पॉर्टेंस में देता हूँ 200 EMA को. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर्स. जब आता है EMA की बात तो मैं ज़रूर से इसको अच्छे से देखता हूँ, बिकॉज EMA इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इट गिव्स यू एन हिंट अबाउट द मार्केट एंड यूजुअली गिव्स एन ट्रेंड रिवर्सल. लाइक अगर 200 EMA इसके ऊपर है तो आपको इधर से ही आपको हमेशा रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है. एंड इफ़ this is the EMA and the market is coming down and retesting this area,
in that case there is a good short opportunity. If the market has crossed this area and again trying for a retest, then this is something very bullish, right guys? So जब वहाँ पे हमको एक perfect retest मिला, तो हमने अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की. अभी भी it's not that far away. And other thing that we've been talking about from months back, कि ये एक inverse head and shoulder pattern है. And if you guys still remember, or if you guys are new, whoever is new to this channel, I will let you know that guys, हमने हमारी लॉन्ग की पोजीशन इस वीक पे बनाई थी $19,000 के आसपास, और उसको मैंने यहाँ तक राइड किया, प्रॉब्ली अराउंड $28,000-29,000 तक. ओके, सो we knew that major resistance 30,000 is psychologically, and the FTX crash was actually implemented from this zone. We had a massive support for year on this area, and then we have broken down. So it will take some time to break this area. It's not going to be that easy, guys. And right now in a daily time frame, in a 4-hourly time frame, we are creating a gigantic falling wedge. Everything right now is showing for a bullish reversal, a bullish continuation inside the market. But there are, on the other hand, there are a few more things that are making me concerned about the market. So the first thing that is concerning me is the dollar. Okay, so the dollar had, after creating this double bottom, so we are watching a weekly time frame chart. Yes, we have got this rejection from this trend line. आपको मैंने इस trend line के regarding भी अच्छे से information दी थी. So the two major levels that we need to consider is going to be the first level. Now that level have got a lower. It's going to be 104. That means 104.22. Okay, so this is the first resistance area for dollar. Okay, dollar index, and the second resistance area is going to be 105.5. So if we are breaking out 104.2, then in that case we can see downwards momentum inside the price of Bitcoin and stock market and forex. Every single thing will be crashing down, at least for the short term perspective, till the price reaches DXY reaches out to the level of 105.5. And if we are getting a rejection from 105.5, in that case we will see a bullish continuation. We can see a bullish reversal inside the market. On the other hand, it will be more bullish at this point if the DXY continues like getting a rejection from this trend line. This is the trend line, right? And after consolidating here, and we lose this pink box area. So once we do that, in that case we will be going for a complete bull run, and significantly it will be very good time for the market to generate a lot of money, right guys? Anyways, there is one more thing that we will need to talk about right now at this moment, is going to be SXP E mini futures. Okay, तो हमको एक ब्रेकआउट तो ज़रूर से देखने के लिए मिल गया है. वी हैव गॉट एन complete uptrend inside the DX inside the E mini futures. Yes, we have got this uptrend in E mini futures, but you need to understand that guys, हम एक resistance की तरफ आ गए. Okay, so on a weekly time frame, on a daily time frame, we are at a resistance right now guys. We are at a resistance and we are getting rejected right now. If the price consolidates and gives a breakout, that's bullish. If the price just consolidates here and stays above it, in that case it's way too much bullish for the stock market and the rest of the crypto markets as well. Okay, so this was something that we have talked about, higher perspective for the E mini futures, for the DXY, right guys? And now I will take you some some other charts that we have need to look around. Okay, so this is something, जैसे कि मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बताया कि हम एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ज़रूर से चल रहे हैं. So you can look this chart in this perspective as well. So where we have these two major supports, okay, we have got wicked out to this region, okay, and this was the second time, and the third time we went below the support, and immediately we have got this impulsive move to the upside. If the market want to go low, in that case it had already went low from this point. In my perspective, I'm going to let you know right now what is my next trade setup in this video. So do make sure, I'm giving you 2 seconds to like this video and to do a comment right now inside this video. After that I will be providing you my next potential setup for the Bitcoin. Okay, I believe you have already liked my video.
All right, coming up with the next. So this is the area of the support for now. Okay, what we need is, we don't want to lose this lower trend line that is possibly nearly around $25,981. Okay, we don't want to lose this area. Okay, and most probably I'll be taking you to the lower time frame, which signal I've already shared with my premium family. So most likely what I'm expecting from the market is, market could again test to the higher levels. So I will take you to the next chart. So this is my Elliott wave perspective. So I have been predicting this part कि यहाँ से ये एक 1 2 3 4 5 and this fifth wave have completely hit out pretty well. Now it could be a start of an impulsive, like a 5 wave structure to the upside, in which it could be 1 2 3 4 and the fifth one. This could be something like this, or it could be कि ये ABC structure बना रहा है. Okay, so I'm not a big fan of this, but I have tried to grab much of it. I have some knowledge about the Elliott wave theory, but I'm trying to implement other things as well, and then I'm determining my trades. So I'm now going to provide you my next potential trade setup, basis on which we have long the market. Sorry guys. So what basically is happening is, we have got this impulsive move to the upside, a channel towards the downside, reaching out to the lower level yesterday night, I believe, 4 a.m. this morning. So probably at this point we were having a retest. I waited for this morning to see how the market is reacting, after which we have got this breakout. So हमको ये breakout तो ज़रूर से मिला, पर it was not that sustainable. इसके वजह से मैंने इस ट्रेंड लाइन, इस ट्राइंगल पैटर्न के ब्रेकआउट होने का वेट किया, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी हिटिंग आवर फर्स्ट टारगेट्स. सो अगर आप अभी इस एरिया में अपना लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द रेंज. प्रॉब्ली थिंक दिस गोना बी टेक यू, आई एम सॉरी. सो व्हाट इज रॉन्ग. So most probably we are looking for 1.83% of loss if you lose this trade, and possibly 3% to 4% of profits with this trade. I'm expecting to, मुझे लगता है in my perspective, okay, कि मार्केट एक बार फिर से इस रीजन के ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा. ठीक है, आई वुड नॉट गोना से दैट आई एम कम्प्लीटली बुलिश अबाउट द मार्केट, कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट अपसाइड चले आता है तो मार्केट फुल्ली बुलिश हो जाएगा, बट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक एक वापस 27,200 से लेके $28,000 तक का मार्क छू सकता है. येस गाइज, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल तक वापस जाके फिर वहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पोटेंशियल सेटअप्स फॉर द बिटकॉइन एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट. फॉर नाउ बिटकॉइन इज़ वेरी डोमिनेटिंग टुवर्ड्स द मार्केट, सो I'm trying to be more focused with the Bitcoin, because alts are not performing well. When there will be a time for alts to shine, I'll surely gonna let you know. Do let me know in the comment section, and do you like this video? Do you want such updates, more of such updates in the coming days? And that's it guys. Do show me your love in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye bye guys.